अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने आप लोगों को जो है व्हाट्सएप किया था आज की क्लास का, बट नोबडी हियर इज प्रेजेंट टू अटेंड द क्लास। I will wait for another 2 to 3 minutes, then I will start recording the lecture and I will send you. But अगर टाइम मैं पहले से आपको बताया करूँ तो you should at least inform me. If the time is not suitable to you, then you can inform me and I can change the timing. लेकिन मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करें एडवांस में. So I will wait for another 3 to 4 minutes, then I will start the class. The class in the previous lectures, we discussed different stages of organizational development, in which we discussed there was entry stage, in which uh, the organization will have to be decide that whether they should use their own expert for the organizational development exercise, or they can hire the outside consultant who can do this exercise of organizational development and change. Then we discussed about the contacting stage, in which there is a contact between the organization and the consultant about the implementation and of that organizational development exercise. Then there is a diagnostic stage, in which we'll have to analyze the organizations for the proposed change for the future. In the diagnostic stage, we have discussed that you will have to require the different sort of data. हमें different किस्म का data चाहिए होता है इस diagnostic stage पे. आज के लेक्चर में इसी चीज़ को हम स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपका डायग्नोस्टिक वाला स्टेप है कि हाउ वी कैन कलेक्ट द डाटा, हाउ वी कैन एनालाइज द डाटा,
and how we can use the feedback of this diagnostic information. And that is the title of our first session of today's lecture. In this lecture, we'll discuss the importance of the diagnostic relationship in the organizational development process. Now, this is a very important step in the relationship as far as the organizational development process is concerned, because all the data is collected in this during this step, and that data will be used further for the proposed change. Then we will discuss the different methods of collecting the diagnostic data. Then we will try to understand the primary techniques used to analyze the diagnostic data. As you are the research students and you are already aware of the different analysis techniques, the same techniques or the similar techniques we will further discuss in this chapter. Then we will discuss the outline of the process issued associated with feedback data. How we can use this feedback data for the further processing it. Then we will describe and evaluate the survey feedback intervention, that how the practitioner, audit practitioner can intervene through that survey feedback data. So this is the outline of today's lecture, and these are very important, step of the organizational development process. Now let's discuss all of these steps in detail. The diagnostic relationship, जो diagnostic का process है organizational development का, that can be concluded and included the different sort of steps. Now, what are the different steps you can see on the screen? The first step is establishing the diagnostic relationship and plan data collection. So, in the very first step, we will establish that what sort of relationship we require between the data required from the organization and how that data will be used for the future intervention. And then we will have to go through the thorough planning through which we can have the data collection. Then that's in the next step, we will have the actual collecting of data. And again, we can use the different tools of data collection. You must be aware of all of these tools. So we can use the different instruments like interviews, surveys, observations, unobtrusive measures. All of these things can be used for the collection of data. Then in the third stage, we will analyze the data, and we can use both of the qualitative and quantitative methods for the analysis of data. And again, you must be aware all of these different qualitative and quantitative methods of data analysis. Then after analyzing the data, we will have a sort of conclusion and feeding back data to the consultant. And then this data may be used by the consultant for the further planning and further intervention. And following up and action planning can be decided by the consultant or the practitioner. So these are the different sort of stages and steps which are included in the diagnostic relationship. Now, in the diagnostic relationship, the practitioner or the body practitioner will have to ask the different steps to himself. That is what is included in the contracting, and that is also included in the diagnostic. We can say that we can term it as a diagnostic contract. What sort of contract will be, with whom it will be, and why we are doing this contract, and when the different contractual details will be done, and how all
all of this the contact will be implemented. So he will have to ask itself with a different question like, who am I? Who do I work for? How will I protect your confidentiality? Now, these are the important issues which the in the organization is also interested. So the practitioner should be clear about all of these questions, and he should be very clear about himself that how will I answer these questions. Then what is in it for you? How it will be helpful for the organization as well as for the OD practitioner. Why am I here and what I am doing? What do I want from you and why? Who will have access to the data? Can I be trusted? So all these are the basic questions which should be kept in mind by the OD practitioner while doing this diagnostic relationship. Then comes the second stage, that is the data collection, in which we establish the diagnostic relationship. In this sort of relationship, we will have to use the different data collection methods. There are the different data collection methods which can be used uh, for collecting the data during this diagnostic information. We can use the surveys and the questionnaires. We can use the interviews. We can use the observations. We can use the unobtrusive measures in which there is no obstruction from anyone, which is the non-participative sort of observations. So every method, have the different strengths and the weaknesses, and we'll have to discuss that what are the different strengths and what are the weaknesses of each of these methods. As you are these research students, you must already be aware of the different strengths and the weaknesses of each of these tools. But for the sake of revision, I'm again repeating here that if you questionnaires have its own advantages and disadvantages, we can easily quantify the data by using the surveys and by using the questionnaires. It will be easy for quantifying the data, and we can use the different statistical tools easily. So that is the basic strength of the questionnaires. But again, the weakness the questionnaires may have, that is the one-way communication. One-way communication means you will distribute the questionnaires to the respondents or the employees, and after employees fulfill or fill their questions, and they will return you. So they cannot have their own, choices to give their ideas. So that's why that is considered the one-way sort of communication which can be used in the questionnaires. That is not the case with the interviews. Interviews, you can have the two-way communication. You can directly ask the interviewees the different questions, and it's in the same way the different interviews can answer you, and they can also ask different relevant questions from you. So that is the two-way communication. But again, there can be the weakness of the interviews and the observations, and one of the weaknesses that it is very difficult to quantify the data which is collected through the interviews and the observations. So that is the basic weakness of these sort of data collecting methods. So we'll have to keep in mind all of these things. Why sometimes it is advisable to use multiple methods. So keeping in view the different strengths and the weaknesses, sometimes it is advisable that we can use the combination of the different methods. So we can, have a sort of minimize the different weaknesses of the different methods. So we can also always use the combination of these data collection methods. Then in the data collection, another important issue to be discussed is the sampling, because it is not possible to go to each and every employee of the organization, especially if the
organization strength is more and there is a large scale organization. So it will not be possible for the OD practitioner to go to each and every employee and that collect the relevant data. So something is a method which can be used alternative as an alternative for the data collection. So something जो concerns होते हैं which should be kept in mind by the audit practitioners. These are how many people should be interviewed and who should they be. Now that is again we can use the different sort of sampling methods and we can decide that what should be the sampling size and sampling method. कितने लोगों से इंटरव्यू करेंगे कि आपका जिसमें काम हो जाए और इजीली चीज़ों को जनरलाइज कर सकें. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द सैम्पलिंग. और किन लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे. अगेन यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स. यू कैन यूज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स फॉर दैट. देन व्हाट इवेंट्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड हाउ मेनी. कितने इवेंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे. अगर हम ऑब्जर्वेशन का मेथड यूज कर रहे हैं तो what events should be observed, कितने हम events को observe करेंगे और how many time we'll have to observe these events. So these are the basic questions which should be aware by the practitioners. And how many records should be inspected and which ones. In this process of data collection, we'll have to use the different data. You'll have to go through the different sort of files. There may be the lump of files in the different organizations. So again, you'll have to decide about कौन सा डाटा कौन सा रिकॉर्ड जो है आप लोगों ने इंस्पेक्ट करना है. Again, it is almost impossible for the OD practitioner to go through each and every file and each and every record in the organization because there is always a pile up of the data in the organizations. So in order to use it efficiently and effectively, the OD practitioner will have to decide what records and how many files they can use for this inspection purpose. Again, for the selection of the records and for the selection of the file, we can also use that sampling method. So again, as I discussed, there are the different issues which should be addressed while doing this sampling in the data collection stage of this diagnostic exercise. The most important issue, as I discussed, is the sample size. We'll have to decide about the sample size. Then there's no hard and fast rule that how much sample size should be selected. You can use the different sort of methods, but there are the different guidelines which can help you that what can be the sample size which can be sufficient to generalize the overall population data. Now, in this case, population size is a very important determinant which can help you about the sample size. Of course, if there is a large organization and the large number of employees are there and the population size is large, so you should go through the larger sample size for that in order to better generalizing the population and representing the overall population. Then again, population complexity is another factor which should be considered by the OD practitioner. If there is a different variation in the overall population, then again you will have to have the larger sample size. And if there is not much variation in the population and there is a sort of homogeneous sort of population and having the similar sort of characteristics, then again you can use the smaller sample size. So these are the different sort of hints which you can use about the selection of the sample size. Then availability of the resources and the quality of the data, that is again very important. If the quality of the data you have been collected through the samples is good, then you can again smaller sample size may be sufficient. But if different employees are not giving you the required information, then you will have to go through the larger sample size.
जी अब्बास आप लेट हो गए हैं, किधर है बाकी लोग, किधर हैं? अब्बास कैन यू हेयर मी? So second important issue which should be considered in this sampling is the sample selection method. Now again, uh, this is very important to decide that which sampling method should be used for the data collection. There are the two broad options which are available before the OD practitioners, and you must be aware of these broad methods because you are the research student and you have already learn about lot of about that research methods. So the two broad methods which are available for the data collection, that is the probability sampling method and the non-probability sampling method. So if you are using the probability sampling methods, then there are the different options available to the practitioners. They can use the random sampling method, again stratified sampling method, systematic sampling method, or cluster sampling methods. So every each of these methods have their own again advantages and disadvantages. And you must be aware that whenever we use the probability sampling method, then these methods will have the more generalizability power, and we can easily generalize the selected sample to the overall population. जी अब्बास आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। जी जी आवाज़ आ रही है, इसलिए आप लेट हो इंटरनेट गए, आप लेट हो गए, बाकी लोग भी कोई नहीं आए। सर इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, बारिश हुआ है इस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैंने वैसे रिकॉर्ड करना लेक्चर स्टार्ट कर दिया था कि मैं 3-4 स्लाइड जो मैंने रिकॉर्ड कर दिए, मैं थोड़ा सा ये जी आज सर। हम डिस्कस कर रहे हैं जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू दी डायग्नोसिस। इसमें हमने फर्स्ट जो हमने इसके पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के, इसमें हमने एंट्री को डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्टिंग हमने डिस्कस किया था, डायग्नोस्टिक को डिस्कस किया था। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं। ये डाटा कलेक्शन मेथड आप क्योंकि रिसर्च पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको डिटेल में पता है, किसी मुश्किल नहीं होगी। इसमें वी कैन यूज द डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, दो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो आप लोगों ने पढ़े भी हुए हैं। एक तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा होगा। आइदर यू कैन यूज द क्वेश्चनर्स और द इंटरव्यूज और द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स के अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। लाइक वी कैन इजीली क्वांटिफाई द डाटा व्हिच इज कलेक्टेड थ्रू द क्वेश्चनर्स। लेकिन इंटरव्यू और जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उससे जो डाटा कलेक्ट होता है उसको हम इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्वेश्चनर्स के जो डिसएडवांटेज ये होता है कि वो वन वे कम्युनिकेशन होती है। एक दफ़ा आप अपने रिस्पोंडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उनसे भी फिल करके वापस ले लेते हैं। तो रिस्पोंडेंट्स जो हैं अपनी तरफ से कोई ज़ाहिर है वो कम्युनिकेट उस तरीके से नहीं कर सकते जो एम्प्लॉइज होते हैं। लेकिन इंटरव्यूज अगर आप ले रहे हैं उसमें जो है दैट टू वे कम्युनिकेशन मेथड फॉर द डाटा कलेक्शन। इसमें डायरेक्ट आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरव्यू से, और उसी वक्त इंटरव्यू भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है या चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकता है। एक तो ये हमने चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है फॉर द डाटा कलेक्शन। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने लेना होता है कि हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पलिंग का मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। अगेन जब आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या चेंज की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एम्प्लॉइज के पास जाएं। अगर तो आपकी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, देन टू सम एक्सटेंट दैट कैन बी पॉसिबल। लेकिन इफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जिधर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, then it will not be possible to collect the data from each and every employee. Then you will have to use the sampling. Sampling में भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, रिसर्च में भी पढ़ा हुआ है
कि दो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं इस चैप्टर में भी वही चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो आपने सैंपल साइज डिफाइन करना है कि वो सैंपल साइज जो है कितना होगा, ठीक है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट वी हैव द गाइडलाइंस व्हिच कैन हेल्प अस दैट व्हाट शुड बी द सैंपल साइज। तो उसमें आपकी पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है और हेटेरोजेनियस है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल साइज देना चाहिए ताकि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस है, एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तरह की उनकी ओपिनियन है, ये इनिशियल पायलट स्टेज पे आपको इसका अंदाजा हो जाता है, तो फिर आपका कम सैंपल साइज से भी काम चल जाता है। देन इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो यू कैन ऑप्ट फॉर द लार्जेस्ट सैंपल साइज। सैंपल साइज के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें डिसीजन होता है दैट इज द सैंपलिंग सिलेक्शन मेथड। सैंपल सिलेक्शन मेथड भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं। इसमें जो ब्रॉड दो मेथड यूज होते हैं, अगेन दैट इज द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड होता है। इनके भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में रैंडम सैंपलिंग हम यूज कर सकते हैं, व्हिच वी यूज द डिफरेंट रैंडम नंबर टेबल्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ डाटा। Then we can use the systematic sampling, stratified sampling और cluster sampling use कर सकते हैं as far as the probability sampling method is concerned। तो आपका जो दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड जो यूज होते हैं उसमें यू कैन यूज द कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड, कोटा सैंपलिंग मेथड होता है, एरिया सैंपलिंग मेथड, snowball sampling method भी आप यूज कर सकते हैं। तो all these are the different methods which are available under the head of that non probability sampling methods। So ये दो important decisions होते हैं जो आप लोगों ने करने होते हैं सैम्पलिंग जब आप कर रहे होते हैं, जब आपने एम्प्लॉय से डाटा कलेक्ट करना होता है। Why it is important to use specialized references or refer to the professional help necessary? Now again, अगर वो जो OD प्रैक्टिशनर है, अगर उनको इसकी रिसर्च की इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, स्पेशली अगर आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एम्प्लॉय जो है ये एक्सरसाइज कर रहा है, तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू कंसल्ट विद स्पेशलाइज्ड रेफरेंसेस, प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं किसी के से सैम्पलिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपका उसको जो प्रैक्टिशनर है उसको रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों का नहीं पता होगा, एक्सपर्टीज नहीं होंगी, then he should get the help from the professionals that how we can use the different probability sampling methods, how we can use the different non-probability sampling methods, and how the sample size should be selected। So उसके लिए उसको अगर उसको अवेयरनेस नहीं है तो उसको फिर इस किस्म की गाइडलाइंस लेनी चाहिए, उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। So ये इश्यूज हैं जो हम सैम्पलिंग मेथड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आफ्टर सैम्पलिंग जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू जो होता है उसमें ये होता है कि हमने अपने डाटा को जो है एनालाइज करना होता है। डाटा एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ दैट डायग्नोस्टिक जो एक्सरसाइज होती है कि हाउ वी शुड एनालाइज द डाटा, क्योंकि डाटा एनालिसिस सही तरीके से होगा उसी की बेस पे हमने कंक्लूजन करना है और उसी की बेस पे हमने चेंजेस डिसाइड करने हैं फॉर द फ्यूचर की। तो इसको भी प्रोफेशनली जो है ठीक तरीके से आप करेंगे तो दैट विल हैव द गुड रिजल्ट्स। नो डाटा कलेक्शन मेथड्स जो होते हैं वो भी आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स भी होते हैं और क्वालिटेटिव मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स आपको पता है कि दैट जिसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं। दैट इज मोर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीन्स कि उसमें फैक्ट्स की फॉर्म में होती हैं जिसकी बेस पर आप डिसीजन लेते हैं। देन कॉम्प्लिकेटेड टू यूज का मतलब इसमें डिफरेंट आपको स्टैटिस्टिकल की ज़ाहिर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपको ओडी प्रैक्टिशनर को स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा नहीं पता तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स की एक्सपर्टीज होंगी तो दैट विल नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। यू कैन यूज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, so that can be used for data analysis। difficult to understand and interpret, again उसकी जो interpretation होती है, उसकी जो understanding होती है, that may be difficult in the sense if the OD practitioner is not the उसकी research की expertise नहीं है या उसको statistics की expertise नहीं है तो उसको मुश्किल होगी। अगर ये expertise है उसकी, then he can easily
understand and interpret the data. बट इसका जो मेन एडवांटेज होता है क्वांटिटेटिव मेथड का, दैट इज मोर, ये हमारा मोर एक्यूरेट मेथड होता है, दैट इज मोर एक्यूरेट मेथड। और इसमें जो क्योंकि फैक्ट्स की फॉर्म में डाटा होता है तो उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज मोर ऑथेंटिक भी ज़्यादा होता है और इसमें बायसेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स एज कम्पेयर टू द क्वांटिटेटिव मेथड्स। अगर हम क्वालिटेटिव मेथड्स को देखें तो इसमें नॉन न्यूमेरिकल मेथड्स यूज होते हैं, लाइक डिजिट्स की फॉर्म में डाटा नहीं होगा, फिगर्स की फॉर्म में होगा, वर्ड्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसको डेट विल बी मोर सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी न्यूमेरिक फॉर्म में भी नहीं आएगा जिसको हम इंटरप्रेट कर सकेंगे। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, पैराग्राफ में होगा, जिसको आपने नोट डाउन किया होगा उसकी फिर आपने इंटरप्रेशन निकालनी होगी। ईजियर टू यूज है इसमें क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करनी पड़ती, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। लेकिन इसमें अगेन इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि मे बी लेस एक्यूरेट, ये उतना ज़्यादा ऑथेंटिकेट नहीं होता, एंड मे बी इट इज़ लेस एक्यूरेट। बस 10 मिनट की 5 मिनट की ब्रेक नहीं है तो चाय पी लूँ जैसे स्टार्ट। ठीक है सर।
बस ब्रेक कर लें 10 मिनट की, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सेशन। 10 मिनट के बाद फिर नया सेशन हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर।